So today we will learn a very wonderful treatment methodology which we are doing for the patient suffering with the sciatica. And when we will do this therapy, and definitely you will realize that it's very easy to do. Anyone can do that. So anyone can do that. Just we have to learn that how to apply the proper approach for doing the Panchakarma therapy for the patient suffering with the sciatica. तो जब हमारे पास कोई भी साइटिका का पेशेंट आता है तो हम किस तरह से पंचकर्मा थेरेपी करेंगे आप देखेंगे और आपको लगेगा कि काफी आसान है. So before doing that, let's do the few minutes recap. In the previous class, we were discussing that sciatica has been told in the Ayurveda as a Gradasri. So the Gradasri is the name of sciatica, and the meaning of Gradr is vulture, right? तो साइटिका को हम आयुर्वेदा में कहते हैं गृद्रश्री, यानी गृद्र मतलब होता है गिद्ध, और गिद्ध के नाम के आधार पर इसे साइटिका नाम दिया गया है. और हमने गिद्ध के नाम पर इसे साइटिका नाम क्यों दिया इसके बारे में हम समझ चुके हैं. सो गृद्रश्री मतलब साइटिका, and the meaning of sciatica as per the Ayurveda, like vata in the prison of kapha. Vata is inside and occupied by the kapha. So kapha is all around the vata. So we have to remove the kapha and we have to balance the vata if we want to read the sciatica pain. तो sciatica pain का अर्थ है आयुर्वेद के अनुसार कि चारों तरफ कफ है और बीच में बात फंस गया है, यानी बात प्रिजन में चला गया है. जैसे देखिए ये प्रिजन में एक बंद कैदी, तो ऐसे ही बात कैद में चला गया है. किसकी कैद में? कफ की कैद में. सो दिस इज कॉल्ड एज पर द आयुर्वेदा कफा ब्रत वात, मीन्स वात इज ऑक्युपाइड बाय द कफा. तो हमें कफ को हटाना होगा और फिर बात को ठीक करना होगा. So we have learned in the previous class, and we also have seen the practical demonstration that how to do the lepan karma, how to apply the paste on the lower back, कि हम lower back में paste कैसे apply करें. How to do the रुक्ष लेपन कर्म, कैसे हम कफ को सुखाएं. So the first we are going to do the रुक्ष लेपनम, and after finishing the रुक्ष लेपनम then we will do the oiling. तो ये दो स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है कि कफ के आवरण को हटाना, और फिर दूसरा स्टेप होता है कि वात को बैलेंस करना. So the step number 1, we want to remove the unwanted kapha, unwanted dampness, unwanted humidity, unwanted things who is making the boundary around the vata, right? Because the nature of vata is flowing all the time. वात का नेचर है हमेशा बहते रहना, और बात को बहना चाहिए. But when the vata is obstructed, blocked, then it will create pain. So the two-step treatment number 1, that is called ruksha lepana. Ruksha lepan means apply the paste, and this paste should be hot in the nature. And the step number 2 will be now do the oiling. अब oiling करिए. So first we will do the step number 1, and after that we will do the step number 2.
And definitely, when the person is having too much pain, we can do the both step on the same day, one after another. तो पहले हम पहला स्टेप करेंगे और फिर हम दूसरा स्टेप करेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग, we are not manipulating too much when the person is having acute problem. हम बहुत ज्यादा खींचातानी नहीं करते, हम हाथ पैरों को खींचते और मैनिपुलेट नहीं करते जब पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है. So first we are going to apply the paste which is hot in the nature, which is dry in the nature. Then we are going to do oiling. तो पहले हम हॉट और ड्राई नेचर के पेस्ट को अप्लाई करेंगे, फिर हम ऑयलिंग करेंगे. दिस स्टेप ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास. So now today we will move to oiling part. So we have seen in the last class that there are many herbs. They are dry and hot in the nature. Like we can see, this is the castor leaves. This is the leaves of the devdar, vach, or shoa, whatever available. It's not mandatory that you should have everything. Whatever available, or if it is not available for you, just buy the powder from the market. It's very easily available in the very economic price. बड़े आराम से मिल जाता है और काफी सस्ते दामों पर. और इसमें ये सारे पाउडर ऑलरेडी मिलाए गए हैं. ऑलरेडी ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर. सो दिस इज कॉल्ड कॉलम कुलथ्यादि पाउडर. कॉलम कुलथ्यादि. So this column kulathyadi powder available in the market. Last time I have bought this powder maybe in the 30 rupees per box or less than that. So this was the first powder, that is column kulathyadi, and this is the another powder that is called kotam chukkadi. Wonderful two powder combinations. The kotam chukkadi is also having many ingredients that are hot in the nature, like the garlic, like the sesame, and like the drumstick. तो कोटम चुक्कादी पाउडर में भी ऐसे कई तत्व इंग्रेडिएंट हैं जो गर्म हैं. So when we are taking these, if you see the column kulathyadi, अगर आप column kulathyadi को देखें, so we can see the jijibus, jujuba, dolichos, biflorus. There are many ingredients. They are also very hot in the nature. So we can take both the powder together. हमने दोनों पाउडर को एक साथ ले लिया. Suppose we have taken two powder, column kulathyadi, kotam chukkadi, mix them well and apply the paste. Demonstration has been done in the previous class. Now if we want to see the ingredient inside the powder, अगर हम ingredient की बात करें, so what exactly they are doing? What the ingredient exactly doing? So these all the ingredients are hot in the nature. So these ingredients are very hot in the nature. So they are digesting the kapha. So they are very good for the kapha. Even if we are taking them as a medicine of the kapha, they will work in the body. So they are breaking the kapha. These all the ingredients, they are breaking the kapha. So let's see the ingredient, like, look at this, jijifa jujuba. So what is jijifa jujuba? This jijifa jujuba is बेर. बेर हम जानते हैं कि बेर खाने वाले खट्टे खट्टे बेर, उसी को जिजिफस जुजुबा कहते हैं. The जिजिफस जुजुबा is this bear or the unnab. So suppose someone is suffering with the cough and cold. If someone is suffering with the cough and cold, even we can use the bear and we can reduce the cough and cold. So in the Ayurveda, as we were told, if you take the bear or the jijifa jujuba
And if you take this gum or the katira gond and take the mishri, only three things: number one, number two, and number three. Number one, bear; number two, gum; and number three, mishri or the crystal sugar. Boiling them with the water, boiling them with the water. Now medicine is ready, and this medicine is very good for the cough and cold. So what we are doing, we are making the powder of bear, we are making the powder of this gum. So we are taking the first one, then the second one in the 2:1 ratio. Then we are mixing mishri in the 4 ratio. So look at here, the first one is 2 parts, the second one is 1 part, and the third one is 4 part. Just boil them in the water, just very little water, and after that let them dry and make the tablets. Just eating the 1 to 2 tablets morning and evening, they are very good for cough and cold and running nose. अगर हम बेर का पाउडर ले लें और गोंद का पाउडर ले लें, अगर हम बेर और गोंद का पाउडर ले लें 2:1 में और उसमें मिश्री मिला दें और इनको अगर हम थोड़ा सा पानी में डालकर उबालें तो एक बहुत अच्छी गोली तैयार हो जाती है. So very wonderful medicine is ready. That's very good for the cough and cold. एक बहुत ही शानदार मेडिसिन तैयार हो जाती है जो कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत अच्छी है. So what I want to tell you, these all the ingredients are breaking the boundary of the kapha. So if the patient is suffering with the sciatica pain, we need to break the boundary of the kapha. So we are applying the things from the outside. Like if you see the sesame also hot in the nature, so it is also breaking the kapha. Garlic is also the hot in the nature, it's also breaking the kapha. And the drumstick also the hot in the nature, it's also breaking the kapha. So we are mixing all together. So there is a powder is ready, that is called कट्टम चिपकादी powder. तो जब हम ये गरम गरम चीजों को एक साथ मिलाते हैं, इसमें और भी गरम चीजें मिला देते हैं, तो एक पाउडर तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं कट्टम चिपकादी पाउडर. Suppose you are not having these all, no problem, just use the leaves of the drumstick. Only 1 or 2 herbs can be used. So first we have to apply the paste. So the first step is done. So after completing the first step, now we will move to the step number 2. पहला step complete करने के बाद अब हम step number 2 की तरफ forward करेंगे, proceed करेंगे. So this was the step number 2. We have taken 2 powders and applied on the lower back, which is the combination of kolam kulatyadi and the katam chukadi. Now step number 2, do the oiling. First we will do the oiling from the outside, then we will do the oiling from the inside. तो पहले हम oiling बाहर से करेंगे और फिर हम oiling अंदर से करेंगे. Okay. So before that, let's see this. So this is the treatment formula for sciatica pain. Number 1, remove the kapha first. This is the step number 1 we have seen. पहला step है कि कफ का आवरण हटाइए. The step number 2, normalize the direction of vata. So bring out the vata from the prison. बात को prison में से बाहर निकाल लो और normalize the direction of the vata, because the normal direction of the vata may be flowing downward, may be flowing upward, may be flowing horizontally. So wherever it want to flow, normalize the direction of vata. Okay, so how to do that? So we will discuss this thing very soon, but before that I will show you that how to do oiling on the lower back. So let's see, this is the lower back area. Suppose this is the person lying down on the bed. And this is the lower back area.
And we know here we have lumbar 4, lumbar 5, S1, S2, S3, where the sciatica nerve is getting compressed. यहीं पर हमारी lumbar 4, lumbar 5, S1, S2, S3 vertebra होती हैं, जहां पर sciatica nerve compression होता है. So how to do the oiling? So in the Ayurveda, it's written, do the Kativasti. Kativasti. Suppose if you are going to the acupuncturist, अगर आप किसी acupuncturist के पास जाते हैं, वो क्या करेगा? The acupuncturist might do the moxibustion. Acupuncturist might do the cupping, or acupuncturist might do the needling, or acupuncturist might do the gua sha therapy. तो अगर आप किसी एक्यूपंक्चर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करेंगे? वो मॉक्सिबेशन करेंगे, वो कपिंग करेंगे, वो निडलिंग करेंगे और वो ग्वासा करेंगे. So the purpose of these all to stimulate the point available here, to stimulate the point. एक ही पर्पज है, आप कुछ भी करो उसका एक ही पर्पज है कि यहां पर पाए जाने वाले पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना. But when we go to the Ayurveda, Ayurveda is a very soft therapy, and they will do the Kativasti, and Kativasti is very enjoying treatment. So how to do the Kativasti? हम Kativasti कैसे करेंगे? So let's see the practical demonstration that how we are doing the Kativasti. Then I will tell you that what to use, which oil to use. So first look at here, whenever we are doing the Kativasti, first we are preparing this thing. सबसे पहले हम इस चीज को प्रिपेयर करते हैं. So I will tell you that how to prepare that. This is the boundaries which we have made with the flour of उड़द दाल. हमने उड़द दाल के माध्यम से ये एक बाउंड्री का निर्माण किया है. We have made the boundary using the उड़द दाल. So this is the boundary made by the black gram flour, because black gram is having very good quality, and when we are putting at some place, we can stick it well. हम इसे आसानी से चिपका सकते हैं. So wherever we want to do the treatment, now suppose if we are doing the moxibustion, you are stimulating the area with the heat. जब आप moxibustion करते हैं तो आप एरिया को हीट से स्टिमुलेट करते हैं. But in the Ayurveda, we are using the oil. Oil is having the inbuilt quality. The oil might be hot in the nature, cool in the nature. So for this treatment, we can use many oil like the Nirgundi oil. Nirgundi oil is one of the great oil, which is the very good oil to reduce the pain of sciatica. हम इसमें निर्गुंडी तेल का प्रयोग कर सकते हैं. और निर्गुंडी तेल एक ऐसा तेल है जो साइटिका पेन के लिए बड़ा गजब का है. Even we can use many other different oil. We will discuss them shortly. So our first responsibility, first duty, we are sticking this boundary. Now you can see it's a very easy method. Sometimes we think, oh, Panchakarma is very difficult, how will do? Because we just think the massage part of the Panchakarma, oh, how can we do the massage? Panchakarma is not the massage. Panchakarma कोई massage नहीं है. Panchakarma beyond the massage. Massage is just one treatment, but other than massage, there are 100 treatment are there. Massage के अलावा 100 से भी ज़्यादा treatment है. And there are many treatment which required skill, not the labor. कई treatment ऐसे हैं जिसमें skill की जरूरत है, labor की जरूरत नहीं है. So after doing this, now we are just waiting for 2 to 3 minutes. Boundary is ready. Now we will decide the oil as per the prakriti.
अब हम चूज करेंगे कि भाई अब कौन सा तेल हम लगाएं, इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, एज पर द प्रकृति, देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द ऑयल. So look at here now. So quickly I will do the demo once again. First we are sticking the boundary of black gram floor. And this is so sticky. Our oil will not be leaked out if we are putting this boundary properly. हमारा oil leak नहीं होगा अगर इस boundary को हम proper लगाते हैं. So remember one thing, first we have to do the Lepan karma for sciatica patient, and the second step we have to do this Katibasti or the oiling or the Snehan karma. पहले हमें लेपन कर्म करना है जो हमने आपको पहले बताया है, और दूसरे स्टेप में हमें ये कटिबस्ती करना है. The timing of Katibasti, we are starting from the 20 minutes, then slowly and slowly we are increasing every day till the 40 minutes at a time. हम पहले 20 मिनट से स्टार्ट करते हैं और बढ़ाते बढ़ाते इसका टाइम 40 मिनट तक ले जाते हैं. And if you do the comparison with the acupuncture, we are having governing vessel points here, like the governing vessel 2, 3, 4, and all the points. Okay, 2 is not here, but 3 and 4 are here, right? And we also have the point of the urinary bladder meridian here. हमारे urinary bladder meridian के भी points यहाँ पे. And we also have the extra point here, extra 21. So these and oils are just, do not think that oil just working on the skin level. Oil केवल skin level पर काम नहीं करते हैं. The oils are working in the very deeper level. It's depend on the quality of the oil. Now we have chosen the oil, so we'll discuss which oil is good for the which constitution, which types of pain. So we are taking the oil now. We are putting very gently. This oil is warm, but we are putting with the hands so we can feel the temperature of the oil. So ultimately, we have to put the oil which patient can wear. तो हमें इतना गर्म तेल डालना है कि पेशेंट सहन कर सके, इसलिए हम हाथों से डालते हैं, हम डायरेक्ट उलटते नहीं है. वी आर नॉट जस्ट प्योरिंग द ऑयल विद द यूटेंसिल. It's not recommended in the Ayurveda. In the Ayurveda, we are putting with the help of hands, squeezing the cloth, and we are putting the oil here in this way. So this is the oil very hot in the nature, very warm in the nature, and the quality of the oil is also very hot, and we can choose the oil as per the problem. जैसी problem होगी वैसा ही oil choose करना होगा. In the Ayurveda, we are choosing different oil for the cervical spondylosis, different oil for the lumbar spondylosis, and a different oil for the sciatica. हम अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तेल चुनते हैं. अगर किसी को गर्दन का दर्द है हम अलग तेल चुनेंगे, अगर कमर का दर्द है अलग तेल चुनेंगे, और अगर नर्व कंप्रेशन है, नर्व पिंच्ड है, sciatica है तो अलग तेल चुनेंगे. In the same way, for the knee pain, we are choosing the different types of the oil because oils are working very nicely. So most of the time for the lower back, we can choose the oil of drumstick leaves. हम कमर दर्द के लिए drumstick leaves का तेल चूज कर सकते हैं. So we are putting the oil, and as soon as it becomes little cold, we are replacing with the hot one. हम गरम गरम तेल डालते हैं और जैसे ये थोड़ा ठंडा होने लगता है हम इसे वापस गरम तेल से रिप्लेस कर देते हैं. तो पंचकर्मा में क्या होता है कि ये इतना गजब का ट्रीटमेंट है, जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट गहरी नींद में सो जाता है. Person will definitely go in the deeper sleep. I have found we are having some murmur point here which is very good for the sleep. यहाँ पर हमारी कुछ ऐसे मर्मा बिंदु होते हैं जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं. They are working on the brain, so the person is going the deeper level of the sleep. So this is a very wonderful place.
right? So this is the Kativasti, a great treatment of the Ayurveda. We have many types of the different Vasti. And this is, now we are filling the oil. And definitely I am making many oils myself. तो हम अपने ऑयल का निर्माण खुद भी कर सकते हैं. We can buy the oil from the market and even we can prepare oil ourselves. It depends on the availability of the time, if we have time, because sometimes we are very busy. It's better to buy from the market. But some oil are very expensive. They're very much effective but very expensive. कुछ ऑयल बहुत महंगे हैं लेकिन प्रभावकारी भी काफी. And some oil are very low in the cost. Few oils are very good for acute injury. अगर किसी को acute injury हुई बहुत अच्छे. Few oil are very good for the sports injury. कभी आप खेलते खेलते गिर गए, लग गए, तो उनके लिए बहुत अच्छे ऑयल है. So in the Ayurveda, you can see the thousand and thousand types of oil. But after that, 10-15 oil are there. They are commonly used for the Vata, Pitta and Kapha personality. So we are putting the oil and we are collecting the oil back. Now we are barming again and putting back. So in this way we are doing again and again this treatment. This treatment look like very simple but it's very effective. यह ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा लगता है, बहुत इफेक्टिव है. All the Panchakarma clinic will do this treatment for sure. जितने भी पंचकर्मा क्लिनिक है वो इस ट्रीटमेंट को करते हैं. Suppose you don't want to use the floor, then there is other treatment that is called pichu. अगर आप ये आटा भी यूज नहीं करना चाहते तो एक दूसरा ट्रीटमेंट है जिसे हम पिचू कहते हैं. We will learn shortly in the upcoming class that how to do the pichu. Right? So now we have completed two treatments. Number one, we have done the lepana karma, applying the paste. And number two, we have done oiling. Now gently, after completing this, we will remove the floor, right? Panchakarma required a very great patience. So it's a treatment methodology which need great patience. If you are in the hurry and curry, then you will pour the oil without using the hands and patient will shout, "Oh doctor." Okay. तो ये कोई जल्दबाजी का ट्रीटमेंट नहीं होता. पंचकर्मा has been considered as a treatment of rich people. ये अमीरों का ट्रीटमेंट कहा गया है. इसे गरीब आयुर्वेद की किताबों में लिखा है कि पंचकर्मा किसको नहीं करना चाहिए, जो गरीब हो. तो बात आती है यार कितना गंदा लिखा है, ऐसा क्यों लिख दिया गरीब हो? Why? Because the poor person cannot afford the oil. And you cannot put oil from your pocket. Okay, you can sponsor 1%, 2%, but you cannot sponsor every person. If you are using the good quality of oil, then in one treatment you spend more than 506, near about 500 rupees. And other than one therapist standing there, one person is standing there all the time, but treatment is super effective. If you combine the Panchakarma treatment, very simple methodology like Lepan and the Kativasti and what we are going to learn in the upcoming class, and with acupuncture, you will see the excellent result within 2 to 3 days. आपको 2 से 3 दिन में ऐसे रिजल्ट दिखेंगे कि आपको लगेगा wow, wonderful. So now let's proceed. So whenever we want to treat the whenever we want to treat the patient suffering with the sciatica, so first and second methodology is done. Now we are proceeding. What to do next? Which oil is good? How to select the oil? And even how to make the oil if you want to make. Yeah, we can make it. अगर हमें
हमने ठाने लिया नहीं हम पुअर लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, तो बनाना चालू कर दो, तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव रिमूव द कफा। नाउ vata is here and kapha is all around. Now the most important thing is bringing the vata in the normal direction. So for that, Virichan karma is recommended for the sciatica patient. Remember one thing, कि विरेचन का मतलब होता है पेट साफ कराना। अगर साइटिका का पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, आप उसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। दर्द जाएगा और आएगा, आप कितना भी एक्यूपंक्चर कर लो, दर्द जाके आ जाएगा। द पेन विल गो एंड विल कम बैक if the person is having constipation, person is not having clear vowel movements. अगर व्यक्ति की वोवल मूवमेंट ठीक नहीं है तो दर्द लौट लौट कर आएगा। So in the Ayurveda, so systematically everything is written. कितनी शानदार तरीके से सारी बातें लिखी गई हैं। कहते हैं कि उसको विरेचन कर्म तो कराओ भाई, प्लीज डू द विरेचन कर्मा। So what is विरेचन कर्मा? विरेचन कर्मा means giving something so that there will be clear stool formation or the person will feel very light. अब हम पेट कैसे साफ कराएं? तो हमको तो आते ही होंगे, हम सबको कुछ तरीके तो आते ही होंगे पेट साफ कराने के। कैसे भी करा दो, पेट साफ करा। In the Ayurveda, there is a very systematic sequence has given how to do the Virichan karma. But suppose we don't want to go in that systematic treatment methodology, you would be knowing how to clear the stool. आप कैसे पेट साफ कराओगे भाई? एनीमा करा दो, नहीं करा सकते, कुछ हर्बल मेडिसिन दे दो, कुछ भी संघ प्रक्षालन करा दो। आप योग वाले हो तो संघ प्रक्षालन करा दो, वो भी नहीं कर सकते, कुछ त्रिफला का पाउडर दे दो, हरितकी का पाउडर दे दो। As soon as your patient will get the clear stool, कुछ नहीं है, खजूर खिला दो कुछ दिन, खजूर को पानी में भिगोकर सुबह पेस्ट बना के खिला दो, काली द्राक्ष उबाल कर खिला दो, त्रिफला का पाउडर और काली द्राक्ष दे दो, कैस्टर ऑयल पिला दो। So you can apply any method to clear the stool. Definitely we are going to learn few methods in the very systematic way how to clear the stool. कुछ मेथड तो हम समझ लेंगे, लेकिन अब मान लो आज की ही डेट में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं तो कि साइटिका पेशेंट का पेट साफ कराना बहुत जरूरी है। इफ द पेशेंट इज कमिंग टू यू, डॉक्टर कैन यू ट्रीट माय लोअर बैक पेन, then you're thinking, oh, the person having problem in the L4 vertebra, okay, there is a compression of the sciatica nerve, okay, the pain is going from here, here, but sometimes we forget to think that okay, the person is also constipated. कभी कभी हम इतना सोच लेते हैं गहराइयों में जाकर, लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि भाई इसका कॉन्स्टिपेशन भी है। इसको तो हम पूछते हैं भाई आपको कॉन्स्टिपेशन है? हाँ, कॉन्स्टिपेशन तो मुझे हमेशा रहता है। So if the person is constipated, do not forget to relieve the constipation. In the Ayurveda, it's written how you can treat the sciatica pain until and unless you treat the constipation. So there is a explanation given in the Ayurveda. I will tell you now how Ayurveda is explaining about that. Let's see this. So look at this chart. Look at here. So as per the Ayurveda, we know there are three doshas: Vata, Pitta, and Kapha.
आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के दोष हैं, वात पित्त कफ. We can further subdivide. Vata is having 5 subdivisions. Pitta is having 5 subdivisions, as well as the Kapha is having 5 subdivisions. वात के भी 5, पित्त के भी 5, कफ के भी 5 subdivisions हैं. So if we talk about the Vata, we can see these are the 5 subdivisions. Number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. There are the 5 subdivisions of the Vata. तो वात के 5 subdivisions हैं. Now, the every Vata has been given a special place in the body, a special place. Every Vata has been appointed as very special sites of the body. हर प्रकार के वात को हमारे शरीर के एक विशेष स्थान में नियुक्त किया गया है, ऑथोराइज किया गया है. Like just example, the prana vata, who is responsible for breathe in and breathe out, that is the prana vata. Vyana vata, who will circulate everything throughout the body, who is circulating all the things throughout the body. And let's come to our point, apana vata. Apana vata will clear the stool. तो ऐसे हर बात का अलग अलग काम है. कोई बात ऊपर जाता है और कोई बात नीचे आता है, जो उसको काम दिया गया उसके अनुसार. और जब हम अपान वायु की बात करते हैं, अपान वायु नीचे की ओर जाती है. द डायरेक्शन ऑफ अपान वाता इज गोइंग डाउनवर्ड and clearing the stool. So when we see the patient suffering with the sciatica pain, the apana vata get disturbed. तो जब भी हम साइटिका का पेशेंट देखते हैं, उसमें अपान वायु गड़बड़ा जाती है. So we have to balance the apan vayu. And how to balance the apan vayu? Let's bring the apan vayu in their own direction, which is the downward. So when we are giving some medicines or the herbs so that stool is going down, so apan vayu become normal. तो जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे पेट साफ हो जाए, तो अपान वायु वापस नीचे की ओर गति करना चालू कर देती है. When the अपान वायु is going reverse, जब भी अपान वायु उल्टी चलती है तो this is the reverse अपान वायु. ओके, रिवर्स अपान वायु. तो जब अपान वायु ऊपर चढ़ती है तो कमर का दर्द होता है. The lower back pain is because of अपान वायु get reversed. The residence of अपान वायु is large intestine or the colon. अपान वायु का जो रहने का स्थान है वो कहाँ है? बड़ी आंतों में. ये वहीं पर रहती है और जब भी खाना आता है तो उसे नीचे धकेल के फेंक देती है. But when the person is constipated, अपान वायु getting reversed, and then the person is getting problem of the colon and the lower back pain. So all the patients suffering with the lower back pain, they are having disturbed अपान वायु. जितने भी पेशेंट को कमर का दर्द है, उन सभी की अपान वायु गड़बड़ है. आयुर्वेद में कहते हैं इसे अपान वायु विकृति. इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो बोलते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा. वी आर टेलिंग दिस कि भैया सबको स्वाहा बोल दो, कोई गड़बड़ ना हो जाए. प्राण उदान समान व्यान अपान, पूरी 5 वायु को हम सैल्यूट करते हैं पहले कि भैया हम जो खाना खा रहे हैं उससे आप सब लोग शांत रहना. कहीं अपान वायु ने बोला कि इसने मंत्र में मेरा तो नाम ही नहीं लिया, चल मैं ही गड़बड़ हो जाती हूँ. अब अपान वायु will not push the stool downward, then the person will be suffering with the constipation, then getting up in the morning, drinking 4 glass water, this much tea, then doing a zigzag movement and going for the stool. Why? तो जब अपान वायु गड़बड़ होगी तो 4 ग्लास पानी पिएगा, 1 कप भर के चाय पिएगा, बॉडी को हिलाएगा डुलाएगा, तब वॉशरूम जाएगा. मतलब अपान वायु रूठी हुई है. When your अपान वायु is good, as soon as you get up, you will be having normal stool without drinking the water, without drinking the tea.
ओके, तो ये अपान वायु विकृति है. So that's why people are suffering with the lower back pain. So as per the Ayurveda, how to rectify the apan vayu vikriti? So there is a treatment that is called विरेचन कर्मा. We will learn that. उसे हम सीखेंगे कि विरेचन कर्म हम घर पे कैसे करें, खुद का और अपने फैमिली मेंबर्स का. It's very easy. So when we are doing the virechan karma, we can rectify the apan vayu. And other than that, so जब पेशेंट आपके पास आएगा तो हमें क्या करना है? लेपनम, स्नेहनम एंड विरेचन, 3 ट्रीटमेंट करना है. हमने जैसे ट्रीटमेंट किए सब कुछ ठीक हो जाएगा और पेशेंट हमारा स्माइल करना चालू कर देगा. सो मेनी पर्सन आर टेलिंग अस, आपने देखा होगा आपके किसी भी पेशेंट से आप पूछना कि अच्छा ये बताओ कि जब आपका पेट खुल के साफ हो जाता है तो कैसा लगता है? तो कहता है कि 50-60% पेन चला जाता है. When the person is having clear stool, then more than 50-60% pain is going away. So what we are telling the patient who is suffering with the sciatica pain, we are giving one medicine. This is called Gandharva Hastadi Kashaya. So the meaning of Gandharva is castor. The meaning of Gandharva is castor. हम जानते हैं एरंड का तेल, अरंडी का तेल. तो कैस्टर से एक लिक्विड बनता है जिसे हम कहते हैं गंधर्व हस्तादि कषाय. ये कोई सिर्फ पेट साफ कराने के लिए नहीं है. इट्स नॉट फॉर द ओनली क्लियरिंग द स्टूल. वी कैन सी द देयर आल्सो जिंजर इज देयर, हरड़े हरित की इज आल्सो देयर, पुनर्नवा इज आल्सो देयर. So there are many ingredients in this गंधर्व हस्तादि कषाय. कभी भी किसी को लगे साइटिका का पेन है, 1 मिनट, साइटिका का पेन है, तो उसका पेट अच्छा करो, उसके पेट की गैस खत्म करो और पेट साफ कराओ. ये एक ऐसा लिक्विड है जो पेट की गैस भी कम कर देगा, पेट साफ भी कर देगा, और अगर ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है, उसे भी ठीक कर देगा. गंधर्व हस्तादि कषाय. So when you are going to the Panchakarma doctor, their doctor very clever. They know, or we can tell, they doctor are very knowledgeable. They know the disease is happening because of the gas, because of the bloating, because of the constipation. So they are doing the Panchakarma treatment. On the other side, they are also giving you this Gandharva Hastadi Kashaya. It's a very wonderful medicine, Gandharva Hastadi Kashaya. Gandharv means errand, Gandharv means castor. 20 ml morning, just give once in a day, 20 ml in the morning. आप सुबह सुबह खाली पेट 20 ml पिला दो. क्योंकि चलो अगर आपने अकेला कैस्टर ऑयल पिलाया तो पेट साफ होगा, लेकिन इसमें तो कैस्टर भी है, अदरक भी है, पुनर्नवा भी है, तो सूजन भी कम होगी और पेट की गैस भी शांत हो जाएगी और पेट साफ भी हो जाएगा. So this is a wonderful oil, and we always give to the patient even while doing the Panchakarma treatment. हम हर पेशेंट को देते हैं पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते समय. क्यों? कहीं पेशेंट बीच में बीमार हो गया तो फिर ट्रीटमेंट बंद करना पड़ेगा. ये देते हैं तो पेशेंट कभी बीच में बीमार नहीं पड़ता. Patient will not get ill in middle of the treatment if we give this. Why? In the Panchakarma, we are telling the patient, okay, now suppose we are doing the cleansing. हम शरीर की क्लींजिंग कर रहे हैं और व्यक्ति का अपनी जीभ पर कंट्रोल तो है नहीं. किसी ने बनाया समोसा, उसने कहा लाओ एक खा लेता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना? या कोई हैवी चीज बनी, मान लो कोई भी हैवी चीज बनी घर में, चलो खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? So in the Panchakarma treatment, only the thing for 7 days or 10 days when you are doing the treatment, the food should be very light. If the person is not following this, then might get ill. तो कई लोग ऐसा करते हैं, 10 उनको बोलने के बाद भी मानते नहीं है. इसलिए एडमिट करके करो तो सबसे बढ़िया, और ना एडमिट करो. अगर आपने ट्रीटमेंट किया, पेशेंट घर चला गया, घर पे जो बनेगा वो थोड़ा टेस्ट करेगा. Person will eat, which is not recommended. Then we are giving this Gandharva Hastadi, it will digest everything. Okay, it will digest everything. So we are in the safe zone. Otherwise, what will happen?
On the third day, person will tell doctor, by mistake yesterday I have eaten bhajia and I am feeling heaviness in my stomach. कि कल हमारे घर में भजिया पार्टी हुई थी, थोड़ी खा ली. कितनी खाई? थोड़ी सी खाई बस, लेकिन तब से हैवीनेस लग रही है. तो हम गंधर्व औषधि उसके जरूर देते हैं ताकि भाई ट्रीटमेंट के समय कोई हैवीनेस ना आए. Okay. So sometime even the patient is eating the normal food, but we are doing the cleaning. So we want that everything should be very digest very easily without putting any effort. So we give Gandharva Hastadi Kashaya 20 ml in the morning, minimum for 10 days. 10 दिन के लिए तो हम देते ही देते. डन. तो चलिए अब आगे की कहानी हम कल बताएंगे, क्योंकि कहानी तो बहुत बाकी है अभी साइटिका की. सो लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट. तो आज तक जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता दूं, when the sciatica patient coming to you, number 1, do the lepan karma, you have learned already. Number 2, do the kativasti, जो हमने आज सीखा. And for the kativasti you can choose nirgundi oil or the drumstick oil. And number 3, you can give this, you can clear the stool of the patient. आप पेशेंट का पेट साफ कराओ. एंड नंबर 4, गिव दिस गंधर्व हस्तादि, है ना. इतना आपको करना होगा. चलिए फिर हम आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं. अब हम मिलेंगे अगली क्लास में. चलिए, थैंक यू सो मच. क्लोजिंग द सेशन नाउ.